everyone, and good morning to all of you. This is our 19th day of 75 days lead coding challenge. Today we have problem which name is find the winner of an array game. Leetcode 1535 problem. So before going forward in this video, please make sure that you have liked and subscribed to this channel. And it's my advice to all of you that please do the code by yourself. At least read the problem and build up the intuition. Give 10 to 20 minutes for this question so that you can understand properly. It's a basically very simple problem. You will understand when I will do the code. So please give 10 to 20 minutes, at least 20 minutes for this. Then you will build up the intuition definitely. So let's read the problem. Problem is saying that we have given an integer array of ARR of distinct integers of an integer k. A game will be played between the first two integer elements of the array ARR0 or array1. In each round of game, we compare ARR of 0 and ARR of 1. The larger integer wins and remains at position 0, and the smaller integer moves to the end of the array. Means जो वाला जो एलिमेंट जीतेगा वो तो मतलब आगे ही रहेगा, और जो एलिमेंट मतलब हारेगा वो एरे के एंड में चला जाएगा, मीन्स उसको रोटेट हो जाएगा वो, ठीक है. So let's see the example is saying that we have given an array and an integer k. If my count bin count equals to the k, then I will return that element. So let's build up the induction. So let's see the page. Open this. Yeah. As you can see, we have given this example array and we have k. So firstly, I will take AR of 0 is a binner. So binner is 2. AR of 0 element and my bin count equals to 1. Initially bin count equals to 1. So I will compare 2 and 1. So we can see 1 is less than 2. So 2 तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, 1 को हम rotate कर देंगे, means 1 will go to the end of the array. So 1 will go to the end of the array. Now our new array is this. So now we compare again 2 and 3. So we can see 2 is less than 3. Now 3 is the winner. So 3 will be at the same position, and this element 2 will go to the end of the array. So now when count equals to 1, because initially when winner was 2 and now winner is 3. So बिन काउंट ऐसे कैसे ही रहेगा, इनिशियली 1 पे ही आ जाएगा क्योंकि बिनर अब चेंज हो चुका है. ठीक है. अब मैं 3 और 5 को कंपेयर कराऊंगा. नाउ माय बिनर इज 5. सो अगेन बिनर चेंज हो चुका है, तो 3 एंड में जाएगा और 5 ऐसे कैसे ही रहेगा. ठीक है. नाउ माय न्यू एरे इज दिस एंड नाउ माय बिनर इज 5. नाउ आई विल कंपेयर अगेन 5 एंड 4. एज वी कैन सी 5 इज आल्सो अ विनर, मींस इन दिस पोजीशन 5 अभी भी विनर है. तो बिन काउंट मेरा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 5 पहले ही विनर था, अब भी 5 विनर है, तो 4 को तो एंड में भेज देंगे, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है. और बिन काउंट मेरा क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, और जो कि के इक्वल है. अब मैंने बोला था whenever my bill count equals to k, I will return that element. So I'll stop and 5 will be our answer. So as you can see, example 2, 3, 2, 1, we can say कि AR of 0 is initially AR of 0, we will take this as winner, and other elements is less than the AR of 0. So count के कितना भी इन चेंज कर ले, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 3 तो हमेशा ही विनर रहेगा. तो इसको आंसर डायरेक्टली 3 विन करा देंगे. सो व्हाट विल बी माय एल्गोरिथम. या सो व्हाट विल बी माय एल्गोरिथम. The algorithm is we will take AR of 0 is a winner. So initially हम AR of 0 को winner लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बिन काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे इनिशियल में. ठीक है. फिर मैं चेक करूंगा इफ माय विनर इज ग्रेटर देन
ए आर ऑफ आई मीन्स बिनर है ना, अब भी बिनर है मीन्स इस केस में जैसे यहाँ 5 बिनर था, फिर यहाँ पे अगेन 5 बिनर है, मीन्स बिनर वाला ए आर ऑफ आई वाले आई goes from 1 to n because initially AR of 0 is my winner, so 1 से अब n तक चलेगा। So in this condition winner is also means अभी भी वो winner है, तो winner है तो मैं क्या कर लूंगा, बीच बिन काउंट को ही बढ़ाऊंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा, बिन काउंट को ही बढ़ाऊंगा। और इन एल्स केस मेरा बिनर चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा था ना, यहाँ पे 2 था बिनर, फिर 3 हो गया, means winner is less than equal to AR of I. In that case, what I will do, I will initialize winner as AR of I because AR of I in else case में AR of I ज़्यादा होगा, तो winner is equal to AR of I and now I will initialize the bin count equal to 1 because winner change हो चुका है, तो bin count को भी change होगा, equal to 1 हो जाएगा। और whenever my bin count equal to k, I will return that element and I will stop. So this is my complete algorithm. Let's do the code so that you will understand properly. So now let's float on to here. So now what I will do, I will initialize int winner equals to arr of 0 means मैं इनिशियल एलिमेंट को बिनर लूंगा, पहले मैंने बोला था इनिशियल एलिमेंट को बिनर लूंगा और बिन काउंट इनिशियलाइज करूंगा। सो इंट बिन काउंट इक्वल्स टू 0, इनिशियली तो बिन काउंट 0 रहेगा, ठीक है। नाउ मैं एक लूप लगाऊंगा for int I equals to 1 to I less than n, then I plus plus. Let's initialize int n equals to arr dot size. So my loop is going from 1 to n. Now what I will check? I'll check if my winner is greater than AR of I. Means बिन बिनर अब भी बिनर है, मींस पहले तो बिनर था, इनिशियली वी आर टेकिंग द AR ऑफ 0 एज अ बिनर, सो अब भी इस करंट सिनेरियो में भी बिनर अब भी वही बिनर है, तो मैं क्या करूँगा, बिन काउंट को ही बढ़ाऊंगा। सो बिन काउंट प्लस प्लस एंड इन एल्स केस व्हाट आई विल डू, इन एल्स केस मींस मेरा बिनर चेंज हो गया है, तो बिनर चेंज हो गया है तो मैं क्या करूँगा, बिनर now my winner is AR of I because AR of is I is greater than the winner, so winner is AR of I और बिन काउंट को क्या कर दूंगा, 1 पे ही ले आऊंगा क्योंकि बिन काउंट अब क्योंकि बिनर चेंज हो गया तो बिन काउंट 1 पे ही जाएगा, ठीक है। नाउ इन फाइनल व्हाट आई विल चेक इफ विन काउंट इक्वल टू के, अगर मेरा बिन काउंट के इक्वल हो जाता है तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न दैट एलिमेंट, सो वी रिटर्न विनर। So finally we will return our winner. So this is my complete code. Let's run this code and see if this will run or not. Okay, now again run this. That was a spelling mistake. Let's submit this. As you can see, it is working perfect. So this is my code. Let's discuss about time and space complexity. As we can see, we are only using a loop, so the time complexity will be go of n and the space complexity will be go of 1 because we are not taking any space in this question. So that is my complete code. If you find this helpful, then please like, share, and subscribe. And if you know another approaches for this, there can be many approaches. There can be brute force also. The brute force I did not discuss just because it will not satisfy my constraint. As you can see, my constraint is 10 to the power 9. So big O of n square will be the our brute force solution. So it will not satisfy my constraint. So I did not discuss that. You can think easily by see means by reading this question.
and there can be many approaches for this. You can do this question in big of n log and I as I think. So let's do that code. And if you know another approaches, then please comment it out. I will see and I will update the answer also, means I will update another approaches also. So it's done. Bye.